It's a huge relief for former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. He will now not have to appear in a special CBI court hearing on the 8th of April. The hearing in Supreme Court in the coal scam, his petition seeking the quashing of summons lasted half an hour. The court stayed the special court summons, saying that important questions of law needed to be decided. The BJP has just reacted to it. Let's listen in to Shahnawaz Hussain. नाम पर और मनमोहन सिंह को जो समन्स दिए गए थे। देखिए, ये अदालती मामला है। निचली अदालत से संबंध हुआ, ऊपरी अदालत ने उस पर रोक लगाई। इसमें कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया की ज़रूरत नहीं है। हम ये मानते हैं कि जो कोल स्कैम हुआ वो कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में हुआ था और कांग्रेस उस वक्त जांच तब से ही चल रही, CBI तब से ही जांच कर रही और ये कोर्ट के ज़रिए मॉनिटर है। पूरी तरह निचली अदालत जो है वो CBI की जो अदालत है उसमें मामला अभी है। वो किसको बुलाएं नहीं बुलाएं तो अदालत सारे पक्ष को सुनेगी। अभी पहली तौर पे ये लोग वहाँ गए थे तो उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन ये अदालती मामला है और कानून अपना काम करेगा। और जांच भी खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कितने बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो लेकिन CBI को बिना प्रभावित हुए जांच करना चाहिए। तो CBI भी सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह मॉनिटर कर रही है इस जांच को भी। लेकिन CBI को आज नोटिस भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और जब पिछली बार पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से समन इशू किए गए थे और बुलाने के लिए डेट फिक्स की गई थी, तब भी कांग्रेस के कई सारे पूर्व मंत्रियों ने आरोप लगाया था कि आपके सत्ता में आते के साथ ही क्या ये कहीं ना कहीं ऐसी राजनीति नहीं हो रही जिसमें कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जाए? नहीं, ये तो पहले से ही है। ये जांच तो कांग्रेस के दौर में ही शुरू हुई है। ये जांच हमारी तरफ से स्थापित नहीं। कोल स्कैम पर तो पूरे देश की जनता ने जनमत दिया था। वो कांग्रेस से नाराज़ थे, इसीलिए तो जनता ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया। जनता का फैसला तो कोल स्कैम पे आ चुका है। अब मामला अदालत में है और CBI जांच कर रही है, तो CBI निष्पक्ष होकर जांच करती है और अदालत निष्पक्ष होकर काम करता है। लेकिन बीजेपी पर कई तरीके के आरोप कांग्रेस ने लगाए। सोनिया गांधी खुद मैदान में उतरी, उन्होंने दिखाया कि पूरी कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह के साथ है। तो एक बड़ा मुद्दा जो आपके हाथ में आया था वो कहीं ना कहीं निकल रहा है बाहर। वो जो स्कैम हुआ था उसमें तो कई कांग्रेस के नेताओं का नाम था। तो पूरी कांग्रेस पार्टी स्कैम उन्हीं के दौर में हुआ है, तो वो साथ नहीं होंगे तो कौन होगा? तो अब इस पर अगला क्या होगा? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी भी आरोप लग रहे हैं कि वो अपनी जीत मान रहे हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह की अगर चुप्पी टूटती तो हो सकता है कि कांग्रेस के कई और नेताओं के नाम आते। अब देखिए क्या होता है। हम तो अदालत के निर्णय, अभी तो शुरू में वो कोर्ट गए थे और उन्होंने समन को ही स्टे किया है, लेकिन वो अदालती प्रक्रिया है, उस पर कोई सियासत नहीं है। ये तो मामला अब अदालत में है। शुक्रिया। तो ये है शाहनवाज हुसैन जो कह रहे हैं कि ये पूरा मामला अदालती प्रक्रिया का हिस्सा है और इस पर बीजेपी उसी तरह से संक्षेप में जवाब दे रही है। कैमरा पर्सन संजय चौधरी के साथ रीमा पाराशर, दिल्ली आज। The Congress party's heavy artillery, the legal artillery, was present in Supreme Court, from Kapil Sibal to Ashwini Kumar to KTS Tulsi to Abhishek Manu Singhvi. Of course, these are pictures of the former Prime Minister's daughters. Dr. Upinder Singh, there you see her in those pictures. She was also there in the Supreme Court. The heavy artillery unleashed by the Congress party in the Supreme Court, where they prayed before the Supreme Court that there was no criminality in an administrative decision. Where was the criminal conspiracy? The CBI hasn't been able to establish a quid pro quo. The CBI had initially filed a closure report, and the legal team of Dr. Manmohan Singh argued that this was a perverse order to summon him as an accused in the 1,86,000 crore rupee coal scam as part of a criminal conspiracy. Let's listen in to what transpired in court. How are you viewing today's development? Well, it's a very significant development. As all of you know, it was an extensive hearing which lasted about 30 minutes, and the judges examined almost every aspect of the case, including the fact that the cognizance had been taken of offences under the IPC without there being any sanction for prosecution under section 197 of CRPC, and also the fact that
which was most disturbing is that not a word is said as to why sanction under 197 has not been taken. After all, this was a clear-cut case. Besides, the learned judge may have overstepped his jurisdiction because normally the courts never interfere in the process of investigation. Investigation has been considered of the police and the investigating agency. The court doesn't say that examine so-and-so, arrest so-and-so, seize so-and-so document, etc. That's the discretion of the investigating agency. But this case is going to be a milestone because each of these fundamental principles of criminal law will have to be restated authoritatively so that there is clarity on these matters and there is unanimity and there is no confusion. So what is ये बहुत महत्वपूर्ण केस है और इसमें आज का ऑर्डर जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई जिस तरह से शुरू की गई वो अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। यहाँ तक कि ये कहा गया कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी है जबकि ना तो जो मटेरियल्स क्लोजर रिपोर्ट के साथ लगाए गए हैं उनमें कुछ बात है कि जिससे क्रिमिनल कंस्पिरेसी इंटरप्रेट की जाए। फिर ये कि आपने जज साहब ने 409 ब्रीच ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कॉग्निजेंस ले लिया, 120B क्रिमिनल कंस्पिरेसी में कॉग्निजेंस ले लिया। ये आईपीसी के ऑफेंसेस हैं और आईपीसी के ऑफेंसेस किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता जब तक कि सैंक्शन ना हो सरकार की। और इसमें सैंक्शन के लिए ना तो किसी ने, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट थी, ना किसी ने अप्लाई किया, ना कोई सैंक्शन आई और जज साहब ने इसके बारे में कुछ कहा नहीं। इतना लंबा ऑर्डर है मगर इसके बारे में कुछ कहा नहीं। मैं ये समझता हूं कि ये एक ऐसा केस है जिसमें शायद क्रिमिनल लॉ का दुरुपयोग अल्टीमेटली साबित हो और ऐसी बात न हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अभी इस केस में बहुत सारे क्रिमिनल लॉ के जो असूल हैं उनको दोबारा से इस केस में कहेंगे ताकि इसका दुरुपयोग कम हो सके। सर, कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर क्या है आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इम्प्यून्ड ऑर्डर है जिसके द्वारा कॉग्निजेंस लिया गया स्पेशल जज द्वारा, उसको स्टे कर दिया है। उसका ऑपरेशन अब ऑपरेटिव नहीं है वो। और दूसरा के प्रोसीडिंग्स भी स्पेशल जज की अदालत में इस केस में स्टे कर दी गई हैं। सभी मुलजमों की पिटीशंस आई थी, सभी के ऊपर नोटिस हुआ है और उसके बाद सीबीआई को कहा गया है कि अपना जवाब फाइल किया जाए। So the former PM will not have to appear before the court. No, there are no proceedings which can be conducted till the Supreme Court decides. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. The Honorable Supreme Court, after hearing arguments advanced on behalf of Dr. Manmohan Singh and others, came to the conclusion that since important and substantial questions of law and the processes of criminal trial were involved to be decided, they would like to decide those issues, and in the meantime they have ordered stay of the proceedings before the trial court and the stay of the summoning order. And headlines today's Ashar Ahmed Khan joins me with more on this. Ashar, the Congress party's legal artillery, big guns were all present in court, from Kapil Sibal to Ashwini Kumar to KTS Tulsi, Abhishek Manu Singhvi, and they've raised serious questions about principles of law being violated in the trial court order.
Well, the allegation of the defense of Dr. Manmohan Singh was that the learned judge perhaps has overstepped what was required. They categorically went on to ask the Supreme Court that where is the criminality, where is the illegality? It's only an administrative matter. There is no criminal conspiracy. What exactly has there been said regarding quid pro quo? So what they are saying is that in this order there is no criminal culpability of the former Prime Minister Dr. Manmohan Singh, and that is what their prayer was. While on the other hand, the Supreme Court has stayed the summons. They say that they will hear this matter in totality. They've also issued notices to the CBI and Union of India. Okay. Now, there are two aspects to this legal case. One, the legal team of Dr. Manmohan Singh says there is no criminality. This was an administrative decision. There was no quid pro quo. There was no criminal conspiracy that's been established. No evidence produced so far. That is one part of the story. And the second part of the story is saying that the legal procedure, due legal procedure, was also not followed either by the CBI or by the learned judge when he issued summons. Well, absolutely. That is also the allegation which the defense of Dr. Manmohan Singh has put forth. What they've said is that they've raised this at a broader level, which is that whether allocation of natural resources to private players, is that illegality? That's also a question that is being raised. So clearly, on the offensive, the legal team of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. So that is why there were lots of points of law which were put up by the legal team of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh, and that is why, as we've reported earlier, also the Supreme Court put a stay on this and said that they will hear the matter fully. Okay, keep tracking that story. We'll come back to you for more on this. We also heard the BJP that said that this is a legal procedure that is being followed. The BJP will continue to raise the issue politically.